उसने हंसा
चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। ओ जादूगर ऐसा जादू जगाया, ज्योति सा सारा जहां जगमगाया। किया प्यार का है चमत्कार ऐसा, बेनूर को कोहिनूर बनाया, बेनूर को कोहिनूर बनाया। ऐ शाह खूबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए हैं, सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए हैं, ओ स्नेह सागर। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन है रविवार। टुडे इज संडे। आप सब जानते ही होंगे कि आज अव्यक्त मुरली पढ़ी जाती है। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द आज की मुरली का अव्यक्त जो बाप दादा's सब्जेक्ट है मुरली। वो स्नेह प्यार प्रेम के ऊपर दिया गया And है। today's Murli is based on true love and experiences of all the relations with one Bap Dada. सुनते हैं और पढ़ते हैं और उसमें मर्ज हो जाते हैं। We read the Murli, we listen to the Murli, and we get merged into the Murli. ओरिजिनल डेट इस मुरली की है 16/12। The original date of this Murli is 16th December 1993, आई है and today we are revising सेकेंड on 23। 12 February मुरली 2023. का टॉपिक है सच्चे स्नेही बन। The title एक बाप के द्वारा The title of the Murli सर्व is संबंधों का Be the ones who have true love करो। and experience all relationships तमे वे माता पिता तमे वे with the one Father in a practical way. लेकिन ऐसा महसूस नहीं किया। In the path of devotion, we used to say that you are our mother and father. God is our mother and father. आज विश्व स्नेही बाप दादा Today, अपने Bap अति Dada स्नेही
The one और loved by the सदा whole बाप के world साथी is seeing his व सहयोगी extremely loving आत्माओं को देख रहे हैं। companions and the children who are इनको constantly देख रहे हैं अति cooperative. स्नेही सहयोगी और साथी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं All स्नेही the Brahmin अवश्य है। souls, स्नेह के कारण तो आज यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। all the Brahmin souls everywhere definitely have love for the चारों Father. ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य है। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। Love has brought about transformation in their Brahmin lives. Even so, there are three types of loving children. स्नेह करने वाले One is of those who have love. दूसरे है The second स्नेह निभाने is of वाले those who fulfill the responsibility of love. स्नेह में And the समाये third हुए। is of those who are merged in love. स्नेही बाबा ने बता दिया है। समाना अर्थात To be merged in love समान बनना। means to become खासकर equal. स्नेही बाबा ने बताया है कि मर्ज हो जाते हैं, समाये हुए होते हैं। उसका मतलब भी बाबा ने बता दिया है कि वो आत्माएं सामना भी कर सकती है, समा भी सकती है और समान भी बन सकती है। The third souls are those who are merged in love. पहला बाबा ने पहले की क्वालिफिकेशन बताई है। स्नेह The करने first वाले कभी qualification स्नेह करते हैं, to be merged in लेकिन love करते करते means to be कभी स्नेह equal. टूट जाता है। To who have love sometimes. का स्नेह कभी But while having love, their love is sometimes broken and their love is sometimes समय connected. स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। This is why from time to time they repeatedly have to make effort to connect their love again. चाहे व्यक्ति से, Why? चाहे प्रकृति के साधनों Because से, as well as love for the Father, they also have love for some people or for some instruments of matter. करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। If there is slightest trace of love in any other direction, even in the thoughts, they come in the list of those who just have love for the Father. हो जाता है। स्नेह The करने sign of love is that without making any effort, their love automatically goes to the one they have love for. हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। One they have love for, those who constantly have love experience, the one they have love for to their support in every situation and in every stage at every moment. If you have love for the facilities, then at that time you experience the facilities to be a greater support than even the Father. साधनों से अगर प्यार होगा या स्नेह होगा या आधार होगा, अगर साधनों से स्नेह है If we have love for the facilities more than the Father, then we अर्थात take the support of the facilities. उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद At भी that आता time, है। those souls retain love for the Father in their thoughts and even think that the love for the Father is elevated. समझते हैं, लेकिन ये साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। But they think that it is necessary to have the support of facilities or of other people. और बार-बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। आधा इधर होगा, आधा उधर होगा। This is why their love is incomplete in both the directions and they have to connect their love again and again. एक बल
Instead of having one strength and one support, they also find it essential to have the support of something else. इसीलिए बाप के द्वारा Therefore, instead of experience all attainments by having love for the Father, they are attracted by some temporary attainment of other supports. काल की प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, इतना आकर्षित करती है जो उसी को They are attracted to them so much, such an extent, that they consider these to be very essential. कितना आकर्षित हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं, लगाव नहीं समझते हैं, They do not consider these to be an attachment, लगाव नहीं समझते हैं, लेकिन सहारा समझते हैं। but a support. इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। Such ones are known as those who just have love. बाबा ने इसको विस्तार में कहा है। दूसरे है स्नेह निभाने वाले। The second are those who fulfill the responsibility of love. निभाने की भी शक्ति है। Those who fulfill the responsibility of love, as well as having love, also have the power to fulfill the responsibility of love. निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्ड देना। To fulfill the responsibility of love means to give a response of that love, to give a return. बाप बच्चों से The return of love is to fulfill the elevated hopes that the Father has in the children in the practical way. जो भी हमारे से बाबा आशा रखते हैं उसको प्रैक्टिकल में पूर्ण करना, ये उनका जो निभाने वाले बहुत करके Those who fulfill the responsibility of love generally demonstrate their love by doing everything in a practical way. However, they sometimes have the experience of being equal to Father, that is, of being merged in love, and sometimes they don't. फिर भी निभाने वाले समीप है, Those who fulfill the responsibility of love are still close, but they are not equal. लेकिन समान नहीं है। निभाने वालों Those who fulfill this responsibility of love receive multi-million-fold courage, zeal, and enthusiasm, and special help from the Father in return. तो निभाने वाले दूसरी कैटेगरी के लोग को निभाने के रिटर्न में पद्मा गुना Those who fulfill the responsibility of love receive multi-million-fold courage, zeal, and enthusiasm, and special help from the Father in return. And thirdly, those who are merged in love constantly experience the company of the Father, के नैनों में whom they love, in their eyes, on their lips, in their thoughts, and in their actions easily स्नेही बाप के साथ and सदा ही naturally. होता है। स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और They स्वतः experience the company of Father whom they love in their eyes, lips, in their thoughts, and in their actions easily and naturally. जुदा नहीं, The Father is not separated from them, बाप से जुदा नहीं। and they are not separated from the Father. बाप के स्नेह के रिटर्न में At every moment, as a return for their love for the Father, they remain full and content with all the attainments they have received from the Father. इसीलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता है। This is why no other type of support attracts them. अल्पकाल की प्राप्ति की
The need for any temporary attainment would definitely make them make someone else their support. That is, it would create a difference in their having full love. स्नेह में समाई हुई आत्माएं Because of being सदा constantly सर्व full प्राप्ति संपन्न of होने all के कारण attainments, a soul who is merged in love easily एक बाप experiences belonging to the one Father and none other. इस अनुभूति में रहती है। तो स्नेही सभी है, All of you have love for the Father, तीन प्रकार के स्नेह but there are these three types of सर्व children. प्राप्ति की अनुभूति एक बाप से मिलती है और एक बाप दूसरा न कोई उसकी अनुभूति होती है। अब अपने से पूछो मैं कौन? Now ask each of अपने now को तो जान ask सकते हो ना? each of you must yourself, which one am I? पति स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो। You do know yourself, do you not? नहीं सकते गॉडली स्नेह, You do have love, and it is out of love that you're following this Brahman life. However, as well as having love, you become number wise in having the power to fulfill the responsibility of that love. स्नेह के साथ साथ शक्ति As well as having love, आवश्यक है। power is also essential. Those who have a balance of both love and power become similar to the Father. समान बनता है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप Such समान souls बनता है। who are merged in love experience it to be difficult to move away from the love of the Father. बाप के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल है। बाप के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल है। समाना It is easy to be merged in love, सहज है, but दूर होना difficult to मुश्किल move है, away from that क्योंकि love समाई हुई आत्माओं के लिए because बाप ही the Father संसार is the world of souls who are merged in love. कौन है? बाप ही है। तो दूर नहीं हो पाएंगे। संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें होती है। In the whole world, there are only two things एक है that व्यक्ति का attract. संबंध One is some relationship with people, and the other is some attainment gained from the various facilities and possessions. तो समाई हुई आत्मा के लिए Souls who are merged in love सर्व संबंध की constantly रस का अनुभव experience the एक sweetness बाप के of all द्वारा relationships सदा with the ही one होता Father. है। जो समाई हुई आत्माएं हैं, उनके लिए सर्व संबंध का रस का अनुभव एक बाप के द्वारा ही For them, the सदा basis होता है। of all attainments is not in things or the facilities, but it is the one Father. न कि वैभव व साधन। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है, The things and the facilities are the creation, रचयिता है। whereas the Father is the Creator. इसका आधार रचयिता है। Those who have the Creator as their support cannot have the slightest thought, प्राप्ति का स्वप्न भी even in their dreams, of having even a temporary attainment from the creation. बाबा क्या कह रहे हैं? जिसका आधार रचयिता है, Baba says those who have Creator as their support cannot have the slightest thought, even in their dreams, of having even a temporary attainment from the creation. बाप दादा को कभी-कभी बच्चों की स्थिति को देख Bab Dada is sometimes amused when he sees the stage of some children. आश्चर्य तो कह नहीं सकते, One cannot be surprised. फुल स्टॉप है। There has to be a full चलते stop. चलते बीज को While moving along,
they let go the seed में आकर्षित हो and जाते हैं। become attracted to the twigs and branches. चलते बाबा कहते हैं बीज को छोड़ टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, Some make other souls their support, आधार बना लेते हैं, whereas others make the facilities their support. शोभनिक नहीं होता है, Because the form and color of the seed are not as beautiful as the form and color of the twigs and branches, देहधारी which are very संबंधों का beautiful. आधार In your body consciousness, सहज you अनुभव easily होता है। experience the support of relationships with the bodily और beings. बाप का आधार देहभान But से परे when you होने go से beyond अनुभव body होता है। consciousness, you experience the देह support अभिमान में of the आने की Father. आदत तो है ही। You have the habit of कितने becoming समय से body देह conscious अभिमान में रहते anyway. हैं। 63 बर्थ तो आदत घड़ी घड़ी खींचती रहती है। न चाहते भी You हो become सकते हैं। body इसलिए conscious देहधारी की even संबंध against का your आधार conscious wish. व सहारा सहज अनुभव This is होता why है। you easily experience the support of some समझ नहीं है, relationship with the ये bodily ठीक beings. नहीं है। Therefore, फिर भी सहारा even बना when you understand अंदर में that कितनी conscious it is not ये right, ठीक नहीं है, फिर you भी still बना make लेते हैं। them बाबा कहते हैं see your support. बाप दादा देख देख मुस्कुराते हैं। Bap Dada smiles when he sees this. लेकिन मुस्कुराते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। Your stage at that time makes जैसे one आपको laugh. क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हैं। It is just as when you relate the story of a parrot in your classes लेकिन वो and नलके पर बैठ in the करके lectures बोल you रहा give. था। It is told someone not to sit on the tap, but the parrot itself was sitting on the tap when वो it बैठा said हुआ it. है, लेकिन वो सबको सुनाता रहता है कि नहीं बैठो। तो इस प्रकार से बाबा ने तोते की कहानी का बताया है। उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था। It told someone not to sit on the tap, but the parrot itself was sitting on the tap when it said. In the same way, some children also think in their own minds that they belong to the one Father and none other. आपसे रिपीट भी करते रहते हैं। They even repeat this to themselves again and ये again. भी सोचते हैं But कि स्थूल में as तो well as सहारा this, चाहिए ना। they also think that they need some support in a physical way. So, और you उस have समय to में laugh at माया that time, चांस लेती है। and Maya seizes her chances at that time. बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करती है, She transforms your intellect to such an extent that you experience a false support to be a real support. जैसे आजकल झूठा Nowadays, सच्चे से भी अच्छा लगता है। false things are even better than real things. जो सच्चा हीरा होगा उससे भी ज़्यादा जो है झूठा हीरा जो है, आर्टिफिशियल जो हीरा है वो चमकता है तो अच्छा लगता है। ऐसे उस समय In the same way, रॉन्ग राइट अनुभव होता है। at that time you experience something wrong to be right. और वो रॉन्ग बात To prove a wrong thing or a false support to be right, to prove something false to be true, it is just like a pillar being put up to strengthen a weak spot. करने के लिए पिलर लगाए जाते हैं। तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए So, too, in order to make your weak thoughts powerful, Maya also puts up a very royal pillar. माया जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर करके प्रूव करने लगती कि नहीं ये जरूरत है, ये लौकिक सहारे की भी जरूरत है, ऐसे वो समझाने लगेंगे। तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए Maya also puts up a very royal pillar. लगाती है। Do you know which pillar she puts up? रॉयल पिलर लगाती है। क्या पिलर लगाती है?
माया यही संकल्प देती है All of you know कि this. ऐसा तो होता ही Maya है, brings this thought. बड़े This बड़े happens भी ऐसे all the ही time. करते हैं, Even many seniors ऐसे do ही this, चलते हैं, and they या move कहते along हैं, in अभी this तो way. पुरुषार्थी हैं, Or कहेंगे they बड़े think बड़े भी we करते हैं, फिर दूसरा we are बार still कहेंगे effort अभी तो हम makers. पुरुषार्थी हैं, We have पूर्ण not तो yet हुए become नहीं ना, complete. And so तो there जरूर will कभी be one कोई ना कोई weakness or कमी रहेगी another. ही। अभी संपूर्ण नहीं बने हैं तो कोई ना कोई कमी तो रहेगी, आगे चल करके संपूर्ण As हो we जाएंगे। progress further, we will become complete. ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी In को this way, मजबूत कर the देते pillar हैं। of weak thoughts ऐसी ऐसी बातें strengthen सुना the करके, ऐसी weakness. ऐसी बातें सोच करके जो है उसको मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार So, नहीं do not लेना। take the support of the pillar in this way. अभी तो हम पुरुषार्थी है, अंत में बन जाएंगे, बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ बाबा कहते हैं, ये कभी इसका आधार न लीजिए। समय आने पर At some time, that artificial pillar will deceive you. बाबा उसका रिजल्ट भी बता रहे, क्या उसे आगे बढ़ के हो सकता है। समय आने पर वह आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे At some time, the artificial will deceive you. Artificial pillar will deceive you. The Father also has to be the support of all relationships. You experience this to a lesser extent. सर्व संबंधों के अनुभव को Now, बढ़ाओ। increase your experience of having all relationships with सर्व Him. संबंधों का जो है उसका अनुभव करो और उसको बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण Because of your experiencing all relationships to a lesser extent, a temporary relationship is forged with someone or स्थूल other. जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग Now, increase your experience of Father being your physical support and of His being the support of things that give you cooperation in a practical way in every situation, even in your physical life. देने वाला सहारा बाप है। ये अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं Do not think that the Father will give you support in a subtle way anywhere. निराकार है, He is incorporeal and subtle. He is not physical, तो है नहीं, but you can experience every relationship in a physical way. अनुभव कर सकते हो। बाबा तो कहती निराकार है या सूक्ष्म है, लेकिन साकार का भी संबंध हर रूप में कर सकते हो। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव You can experience His company in the physical way. So, understand this experience in depth and make yourself strong और in स्वयं this. को इसमें मजबूत करो। तो व्यक्ति, People, वैभव things, and facilities will not then attract you. नहीं करेंगे। Now, साधनों increase your experience of using the facilities just for the sake of it साक्षी को and of using them in doing service as detached observers. अनुभूति बढ़ाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं? साधनों को निमित्त मात्र Do not make them your support, but use them for the sake of it. कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। वो दोनों के अंदर बहुत छोटा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा फर्क है।
एक इधर लाइन इधर की में आ जाएगा, एक इधर में आ जाएगा। सहारा नहीं बनाओ, Baba says don't make निमित्त मात्र हो। Baba says don't make them your support. इसको Just use कहा for the जाता sake है of it. Be a detached observer. स्नेह में समाई हुई This is समान known as a soul who is merged in love and तो equal. अपने से सोचना है कि So, मैं कौन, think about it. समझा? Who am I? Do you अच्छा, understand? अच्छा. टाइटल जो है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा हूँ। अपने में से सोचना कि मैं कौन हूँ। तीनों आत्माओं में से तीन प्रकार के स्नेह आत्माओं से Today कौन सी Baba आत्मा has talked about three बाबा ने उसका different कारण types of बताया, निवारण souls, बताया, and we have to निमित्त check मात्र हो, ourselves in which यूज category करने do के लिए we भी बताया, fall लेकिन in. सहारा न बनाए। Baba says don't make things or people your support. Just be a detached सदा observer. स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को Now, सदा to the एक souls बात who से are equal to the सर्व Father संबंध का and अनुभव constantly करने वाली merged in आत्माओं love, को to the सदा souls who एक constantly बाप को experience आत्मा our होकर relationships सच्चा and सहारा with the अनुभव one करने Father, वाली आत्माओं को to the souls who सदा constantly experience the सर्वव्यापी one Father रचना to be in the बाप image के of द्वारा support अनुभव करने and the वाली true आत्माओं support, को to the souls सदा who सहज constantly experience स्वतः all attainments एक बल from the one एक Father, भरोसा अनुभव to करने the वाली truly loving आत्मा souls वाली who सच्ची स्नेही easily आत्माओं को and naturally बाप दादा experience का one याद strength प्यार and one और support, स्नेह। love, remembrance, and namaste from Bap Dada. बाबा किसको ज्यादा नमस्ते कह रही है? जो स्नेह में समाई हुई आत्माओं को। दादियों से मुलाकात To the Dadis, सदा समाये हुए है या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। you are constantly merged in love, are you सिवाय not? एक बात के Or और कोई do दिखाई you नहीं have to देता। make effort to stay in जब कहानियाँ remembrance? सुनते हो तो You are हंसी not आती able है। to see anyone except the one Father. कहानी तब तक चलती When you है hear the तब तक stories, समझ में नहीं you have आता। to laugh. While the जब story कहानी is going समाप्त on, होती है they are तो not able to सोचते हैं understand what is कि क्या happening to हुआ। them. But when the story is मैं over, ही they या think, और कोई what happened? था। They even think, ऐसे was ही it me सोचते हैं or someone else? क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना। Because at that time they are under another influence. तो परवश को अपना होश नहीं होता है। Those who are under another अपना होश influence होता है are not तो फिर aware of आगे बढ़ने का themselves. जोश भी आता है। When they become aware of अच्छा, themselves, they संगठन then have बढ़ता to जा रहा है और बढ़ता then have the रहेगा। strength to move forward. The और gathering is आप growing निमित्त आत्माएं and it will continue to grow. सब And you ये सब instrument खेल souls में are मगन happy होते रहते हैं। seeing all of these games. सभी चल रहे हैं, All of कोई you चल रहा are है, moving उड़ along. रहा है। Some are और moving आप along, क्या करते हो? some are flying. And उड़ते what are you उड़ते doing? साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो। While flying, रहम दिल you make others fly with you. बाप के रहम दिल आत्माएं बन गए। You have become merciful children of the merciful रहम आता Father. है ना, So, you feel mercy. Do घृणा you नहीं not आती feel है, dislike? रहम आता है। You do not feel dislike. और ये You रहम have भी mercy, दिल and के this प्यार mercy का काम करता acts है। as love for the heart. रहम जो है वो दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, Acha, जो भी चल whatever रहा है is happening अच्छे से is the अच्छा best चल of रहा all. है। अथक बन सेवा कर रहे हैं ना। You are serving tirelessly. निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख Everyone also has enthusiasm when they see the tirelessness of the instrument souls. अथकपन सेवा कर रहे हो ना। निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आ जाता है ना। अच्छा, अच्छा, बाप दादा की
Personal meeting with Avyakt Babdada. अपने को सदा संगम युगी साधारण को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और Finish being ordinary and make the sanskar of speciality natural and your nature. के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो Do you constantly experience yourself to be in spiritual pleasure of the confluence age? Do you always stay in pleasure or are you sometimes in pleasure, moj, क्या हालचाल and sometimes in confusion, munj? मुझते हैं या मौजों में रहते सदा बाबा पूछ रहे क्या हालचाल है Or do you stay in constant pleasure? What is your state? When any such situation or examination comes, are you confused? In brackets, for some short time. तो उस Some would say it for a short time. थोड़े समय में So, what would happen if death were to come in that short time? जाए काल आ जाए तो क्या होगा मुझ के समय में अकाले मृत्यु का तो समय है ना This is the time of untimely थोड़ा death, समय भी अगर मौज में is it बिताए, not? मौज के If, बजाय मुझे instead of being in pleasure, you are in a state of confusion, even for a short time, and if that moment becomes your final moment, then what would the final thoughts be that lead to your destination? This is why you continue to hear constantly ever ready. या हर घड़ी What is the meaning of ever ready? Are you ever ready at every moment? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में Let no problem ever be an obstacle to your becoming perfect. संपूर्ण बनने में विघ्न रूप न बने अंत अच्छी If the end is good, भविष्य then the और beginning नीति of the future will also be good. तो एवर रेडी का पाठ This is why you are taught the lesson of ever ready. ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा Do समय not होता think है, that it is just for a short time, एक सेकंड में एक सेकंड because भी धोखा you दे can be सकता है। deceived for even a short time, भी सोचते हैं कि for थोड़ा even a समय second. है, लेकिन बाद में जो है हम मौजों में रहते हैं तो वो थोड़ा समय का जो पूछना होता है वो भी धोखा दे सकता है वैसे सोचते हैं You generally think that it doesn't last for a long time, ऐसा तो 2-4 मिनट चलता है that it just lasts for 2 to 4 minutes. हो सकता है But even 1 second can be deceptive. Therefore, don't even think about this for a minute, मूल्य हो because you are the most valuable souls. कोई दुनिया में You are invaluable. Invaluable souls cannot be compared to souls of the world. साधारण समझेंगे People of the world consider all of you to be an ordinary. विशेष But आत्माएं you are not ordinary. You are special souls. का अर्थ ही है A special soul means that whatever action you perform, whatever thoughts you have, and whatever words you use, every word and every thought is special, not ordinary. विशेष आत्माओं के हर बोल हर संकल्प विशेष है साधारण नहीं हो समय भी साधारण रीति से नहीं Let your time not be spent in an ordinary way. और हर संकल्प विशेष हो Let every second and every thought be special. विशेष आत्माएं This is known as being a special soul. करते साधारण हो जाए
So, check that you don't become ordinary while doing something special. तो अपने आप को विशेष आत्माएं बनाएं। कई ऐसे सोचते हैं Some of you think that they haven't made any mistakes, कोई पाप कर्म नहीं किया, that they haven't committed any sin, उल्टा सुल्टा शब्द that नहीं they haven't used any such wrong words. और वर्तमान But did you make your future and your present elevated? नहीं किया है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या किया है? बाबा कहते हैं, You didn't do anything bad, बनाया है, but did you do anything good? बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा किया है। बुरा कुछ नहीं किया है, लेकिन अच्छे शब्द बोले हैं, अच्छा संकल्प किया है। फिर ये नहीं चेक करो, Baba says, do not just check that you didn't do anything bad, but rather than not doing anything bad, did you do the best of all, or was it just something ordinary? तो ऐसे साधारणा नहीं हो, Let there be, श्रेष्ठता हो, let there not be such ordinariness. लेकिन जमा Let there be something elevated. जमा तो तब होगा जब There wasn't any loss, but श्रेष्ठ वाणी हो, was there any accumulation? क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। This is because the time to accumulate is now. अनेक जन्म खाते रहेंगे, You will eat for many future births from what you have accumulated at this time. कि नहीं किया है उसको नहीं सोचने का है, हमने खराब काम नहीं किया है, खराब शब्द नहीं बोले हैं, लेकिन क्या अच्छे शब्द बोले हैं। Baba says don't just check that you haven't done anything bad, but you have to check what good have you done. जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। Baba says so you will only eat as much as you have accumulated. You will not. Will you not? If you accumulate less, you will have less to eat. That is, your reward will be less. तो कोई हर्जा नहीं, Your aim is to attain an elevated reward. स्वर्ग में Or does it not matter if it becomes ordinary? नहीं होगा। I will go to heaven anyway. साधारण I will not have any sorrow. So what does it matter if I become ordinary? तो चेक करो, Does this matter or will it do? हर संकल्प So check that every second, every thought is special. के देह भान का अभ्यास नेचुरली न चाहते हुए भी चलता रहता है। देह अभिमान में आना The practice of body consciousness has continued for half a cycle, naturally, against your conscious wish. नेचर हो जाए, Has it not? It has become natural to become body conscious. Has it not? In the same way, let the soul conscious stage become natural and part of your nature. Nature automatically does its work. You don't have to think about it. You don't have to create that. You do not have to do anything because it happens automatically. तो ऐसी विशेषता के संस्कार So, नेचर बन जाए, let such sanskars of you, of speciality, become your nature, and that should emerge from each one's heart. Do not say, my nature is such, my nature is such. No, it should emerge from each one's mouth and mind. My nature is the speciality of a special soul. So, it is like that, or do you have to make effort? नेचुरल संस्कार बन जाए, उसमें मेहनत नहीं लगती है। You don't have to make effort for something that is your nature. तो वो If the nature of some are being entertaining, they automatically continue to entertain. पता भी नहीं पड़ेगा, They don't even realize what they have done. कोई कहेगा तो भी कहेगा, Even if someone tells them something, they would say, what can I do? That is my nature. ऐसी हो जाए, So,
let your nature also become one of being special. कोई आपसे पूछे, If someone asks you, कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, if someone asks you what your nature is, नेचर है ही विशेषता की। let it emerge from everyone's heart साधारण that your nature is special. क्योंकि मर्जीवा हो गए ना, That of ordinary actions have now finished साधारणता because से मर गए, you have now died विशेषता में alive. जी रहे हैं, मानो So नया you have died from being ordinary and you are living with speciality. साधारणता पास जन्म का नेचर This is अभी की नहीं, क्योंकि नया that is जन्म you now have a new birth. तो नए जन्म का की So नए जन्म की being नेचर ordinary विशेषता है। was the nature of your past birth, not of the present, because you have now taken a new birth. तो अभी क्या करेंगे, So experience being special as the nature of your new birth. और So what will you do now? साधारणता न हो। Finish being ordinary. Let there not be anything ordinary even in your thoughts. Do you mothers stay in pleasure? कोई भी बुझाने की कोशिश करे, No matter how much someone tries to confuse you, में रहो। you just stay in pleasure. Those who try to confuse you will get confused, but you will not get confused, क्योंकि because it is the duty of those who do not have the knowledge to confuse others, and the duty of those who have knowledge to stay in pleasure. वो अपना काम करे, आप So let them do their work and you do your work. Constantly experience pleasure, for only then you will be able to stay in spiritual intoxication. जो होगा ही नहीं वह कह भी नहीं सकता है। If you are that, then you will be able to tell others, will you not? क्योंकि Those who are not that will not be able to tell others. क्या याद रखेंगे, You can issue a challenge that you are not those who become confused because you are special souls. मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है, ऐसी हिम्मत वाले हो ना। हिम्मत What will you remember? We are special souls who stay in pleasure. मदद स्वतः ही मिलती है। अच्छा You have such courage, do you not? वरदान Those who have courage automatically receive help. के द्वारा Acha, blessing. को अपना बनाने वाले May you become full of all the treasures of fortune. खजानों से भरपूर By making the bestover of fortune belong to you easily. सहज विधि के द्वारा विधाता को May you become full of all the treasures of fortune by making the bestover of fortune belong to you easily. उसका विस्तार Explanation. भाग्य विधाता को अपना The way to make the bestover of fortune belong to you is to have a relationship with both the father and the dada. कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है। Some children say that they have a direct connection with the incorporeal, that the corporeal one has also received everything from the incorporeal one, ब्रह्मा बाबा के सामने and so they will also attain everything directly from him. शिव बाबा ही थे, तो वो ब्रह्मा बाबा जो है वो शिव बाबा से प्राप्ति कर सकते हैं। देखो ये भी कितनी रीजनिंग सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा के Like some people say that Father Brahma has also taken everything from the incorporeal one, then why can't we take directly everything from the incorporeal one? But Baba says, however, this is like using a broken key. डायरेक्ट निराकार से कनेक्ट Those who say that we have direct connection with the incorporeal, से सब कुछ पा लेंगे, this is like using a broken key. चाबी है, टूटी हुई चाबी है। You cannot create your fortune without becoming a Brahma Kumar or Kumari. साकार के बिना
Without the corporeal one, you cannot become a master of the treasure of all types of fortune, because the bestower of fortune shares the fortune through Brahma. So, know the way and become full of the treasures of all types of fortune. ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य नहीं बन सकता है। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक नहीं बन सकते। Baba says, without the Brahma, we cannot attain and become full of all treasures and all types of fortune. जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। स्लोगन है, Slogan: स्वयं से सेवा से claim a certificate from yourself, from the service, तब सिद्धि and from everyone else, and you will become an embodiment of success. Claim a certificate from yourself, from service, and from everyone else, and you will become an embodiment of success. इशारे Om Shanti. आज 12 तारीख है। जिस बात Avyakt signals: से प्रतिज्ञा की जाती है whatever promise you make with determination in bracket force पावरफुल will take on a practical form उसमें because it is filled with willpower. जैसे स्थूल कार्य Just as no matter how much physical work you do, you have to do, कर लेते हैं। you make a promise and definitely accomplish everything. करने का ख्याल होगा If you have weak thoughts and don't have the desire to do something, you will never accomplish that work, करने से and you will also make many excuses. बहाने भी निकल जाते हैं। By promising to do it, you are able to find the time and to do it, and there will be no excuses. Om Shanti. ओम शांति। आज शाम को और कल सुबह से अमृत वेले का योग डायमंड हॉल में ही रहेगा। Today's evening meditation will be, and also the Amrit Vela Yoga will be in the Diamond Hall. समर्पित भाई बहनें शांतिवन निवासी 11 बजे कमल कुंज में पहुंचे। All the Samarpit brothers and sisters will reach सभी सेवा Kamal Kunj at 11 o'clock. सेवा के लिए डायमंड हॉल में पहुंचेंगे। पांडा भवन All the Sevadaris of के जगदीश भाई के Diamond Hall have to report 9 p.m. थे विपिन भाई, उन्होंने कल शाम को शरीर छोड़ा। आज शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार मुक्ति धाम में किया जाएगा। जो भी भाई बहन ने Bipin Bhaiji has left his mortal body, and the last rites will be done tomorrow 4 p.m. evening. मीटिंग हॉल में रहेगा। अभी हम सबके बीच में कुमारी माधुरी मैराथन गर्ल के नाम से सम्मानित किया जाएगा। उसके Today बारे में 8:30 in आपको सभी भाई the बताएंगे। at night there will be night class in the Dadiji meeting hall. जोरदार ताली से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत विशेष खेलकूद प्रतियोगिता में उन्होंने 90 मेडल जीते हैं। We have Madhuri Behan in with us. She has received गोल्डन गर्ल ब्रह्मा कुमारी माधुरी बहन का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। 90 medals. आप नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट हैं। She is national and international athlete. She is a marathon girl. विशेषता है कि आप ब्रह्मा कुमारी हैं और कुमारी हैं। She is a Brahma Kumari. आप रनर एथलीट हैं। आपने मैराथन में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर She is a runner and she is an athlete. She has participated in many marathons. 400 मीटर 800 मीटर 1500 मीटर She has 5000 मीटर और 10,000 participated in करती हैं। 500 meter, आपको अभी तक 400 मेडल meter, मिले हैं और 22 and ट्रॉफी etc. मिली हैं। She has won 90 medals उसमें से and आपको 22 4 trophies. सिल्वर मेडल नेशनल लेवल के अवार्ड She has won 4 silver medals at national level, स्टेट लेवल पर प्राप्त हुए। and she has won 5 gold medals 2020 at में state गुजरात level. स्टेट ने आपको बेस्ट वुमेन ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड 2020 इन स्पोर्ट्स
the Gujarat government has given her, declared her the best woman, एम्बेसडर भी बनाया गया है। and she's the और 5 brand मार्च को ambassador. गुजरात में 10 किलोमीटर बीच मैराथन में आप पुनः भाग लेने वाले हैं। मैं निवेदन करूंगा ये मैराथन गर्ल से कि 2 मिनट अपने अनुभव सुनाएंगे और उसके बाद आपको आदरणीय हेमलता दीदी जी आपका संस्था की तरफ से सम्मान करेंगी। बहन माधुरी। First of all, she is a Brahma Kumari. She feels, I feel that whatever I am here, whatever I am today, it is all because of Baba. When I was in knowledge, before coming to knowledge, I just had one medal, and now I am in this knowledge, in this path of knowledge since 5 years, and through meditation and through this knowledge, I have achieved so many medals and trophies. Though I don't have physical wealth, but then I have the power of the Almighty God. I give my best, I put all my effort to give my best. I feel proud of myself that I am a Brahma Kumari. Though we have many qualities, we should be able to implement our qualities in every field. We should always put our aim in front of us, and we should follow our aim, and we have to have a strong determination and walk towards our aim. Today, whatever I am here, it is all because of Baba. But I feel that you all souls are more special because you give your service in this yajna, but I am in the outside field. I am in the outer world, but then I love the vibrations of this place a lot, and I feel that blessings take us afar and forward. So we should always earn blessings from each and every soul. अभिशील दीदी और हेमलता दीदी उन्हें संस्था की तरफ से शाल उड़ाकर सम्मानित कर रहे हैं। मैंने एक बहुत सुंदर बात कही कि मैं तो वहाँ फील्ड में हूँ, लेकिन आप सभी बहनें जो सेंटर्स को संभालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप वापी से हैं, गुजरात वापी से हैं, गुजरात वापी से हैं, और अनेक फंक्शंस में भी आप चीफ गेस्ट बन करके जाती हैं और वहाँ बाबा की सेवा भी आप करती हैं, बाबा का नाम रोशन करती हैं, मेडिटेशन के बारे में लोगों को प्रेरित करती हैं। सब कुछ यहाँ नहीं दिखाया जा सकता है, सिर्फ आपको यहाँ गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दिखाए जा रहे हैं। हमारे मोहन भाई हेडक्वार्टर के ट्रांसपोर्ट्स के कोऑर्डिनेटर हैं, आप भी कंपनी दे रहे हैं। ओम शांति। और अभी हम 2 मिनट योग में बैठेंगे। ओम शांति।
साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। है सजी हमारी दुनिया जब रंग दिया जीवन ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। आज दिवस मंगल आया, उजली मिली है राहें। बदला है संसार है बदली, बदली हुई निगाहें। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन।